you could do the same. I would go the distance if you could take the blame. If you kept me waiting on your word, would you give me nothing in return? Said I promise you would, if you could do the same. I would go the distance if you could take the blame. Said you'd change your state of mind, close your eyes, but nothing much has changed since you cut your hair. I thought I wanted to see if you could be the only one. If you kept me waiting on your words, would you give me nothing in return? And I need to know if you'll be gone, but I guess your silence keeps me warm. जाती सांसों की रवानी मंसूर, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूर, आती जाती सांसों की रवानी मंसूर।
حبيبي محتاج لك إلي عينيا دنداي لك ولو هو لك كل يكون يا حبيبي محتاج لك तू ही जीने का सहारा है मेरी मौजों का किनारा है मेरे लिए ये जहां है तू तुझे मेरे दिल ने पुकारा है जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है ख्वाबों में तुझको संवारा है जज्बों में अपने उतारा है मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है ख्वाबों में तुझको संवारा है जज्बों में अपने उतारा है मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है ख्वाबों में तुझको संवारा है जज्बों में अपने उतारा है मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं है पीने का मौसम तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है तेरे बिन जी नहीं लगता तेरे बिन जी नहीं सकता तुझ पे है हारे मैंने मारे दो जहां कुर्बान मेहरबान के मैं तो है मुझ में समाई है यूं जिस तरह तू कोई हो नदी तू मेरे सीने में छुपती है सागर तुम्हारा मैं हूँ पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम पी लूं तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम
पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। शाम को मिलूं जो मैं तुझे, तो बुरा सुबह न जाने क्यों कुछ मान जाती है ये। हर लम्हा, हर घड़ी, हर पहर ही तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये। पी लूं मैं धीरे धीरे जलने का ये गम, पी लूं इन गोरे गोरे हाथों से हमदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है, भड़का भड़का है।
रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खत्म हो दुनिया मेरी, दुनिया दुनिया मेरी। तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खत्म हो दुनिया मेरी, दुनिया दुनिया मेरी। ये बात दिल में थी नैनों ने बोल दी, मैं हूँ तेरी, मैं हूँ तेरी। तुझको ही याद करके आहें भरूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। Show mercy on it. ਦੋ ਦੋ ਘੋੜੇ ਮਹਿਗਨਾ ਨੀ, 4G ਵੈਗਨਾ ਨੀ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਚੱਕੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ, 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ 36। ਮੈਂ ਨੀ ਇੱਕੋ ਨਾਰ ਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ, 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ 36। ਬਲ ਕੱਢ ਤਾਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਰੀਜ, ਹੌੜਾ ਰੁੱਖਿਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਤਮੀਜ਼। ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਭਲਾ ਨੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ, ਬੈਠਾ ਡਬਲਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼। ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਹੁਣ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ, ਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਝਾਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਲਾ ਰੁਕਾ ਨਾ ਰਕਾਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਾਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ, ਨੱਡੀ ਤੋਂ ਬਣ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਬਿਆ ਰਕਾਨੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਮਿਲਾਨੇ ਅਫਗਾਨੇ ਵਾਲੀ ਖਾ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਦਰਜੀ ਰਕਾਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਮਹਾਲੀ, ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸੌ ਮੰਗਾ ਕੇ। 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਚੇਂਜ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਕਾਨੇ, ਨਿਤ ਯੂਈ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਕਾਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਲਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਸਮਾਧੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਕਾਨੇ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਮੱਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਟਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਗੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੈਮਰਾ ਫਲੈਸ਼, ਹੁਣ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜੱਦੀ ਮਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ,
सानू सिद्धा ने बना के नहीं हालात साडे पुट्ठे तू तां हुणे तंग आ गई बीबा नींदरां उड़ा के सानू कई साल हो गए नहीं ओ चंगी तरह सुत्ते नारा ठार के ते बहरी रखा साड़ के रकाने पींदे मोटरां दे जहां पट्टू काड़ के रकाने तेरे बुल्लां दे मरे ने मैं भी एक एम लाता हले नवियां फरारी जुत्ती झाड़ के रकाने दिल तोड़ते मैं शीशे साक मोड़ते कतारां विच 18 होर पक्कियां दूरों मत्था टेकदियां मुड़ मुड़ देखदियां असी नहीं ओ एक बारी तक्कियां मैंने इको नहारदा मैं 10 बारी बाहरदा मैं ओदे उत्तों 100 दियां गत्तियां टाइम लगू मिटणे नूं सानू थले सिੱਟਣੇ नूं 21 बारी जोर ला ले 36 ओ कुड़ी जट दी फ्रैगरेंस दूर तो पछाणे असी आशिक नਵੇਂ नी शिकारियां पुराने गल सुकदा कहंदी तू जदों सुपने च आਵੇਂ नट्टी उदों दी सौंदी आ पानी रख के सराणे मैं कह चल दे रकाने सिक्के मित्तरां दे खोटे आके बहिंदे रकाने चीने मित्तरां दे कोठे तैनू सोहणीए रकाने करां हत्थां नाल शाम जिवें करदे ने शामां साडे पिंडां दे बलोटे तेरा 100 तो पर पारा होगी ढिल्ली कुछ खा के तेरी तारदा नजर गन पाउडर छुआ के ए तो डरना रकाने देख ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਬਲੇਟਾ ਦਿੰਦੀ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਾਫੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡਾਲੀ ਥੋੜੇ ਹੰਬਲਾਂ ਰਕਾਨੇ ਲੈਂਬੋ ਨੀਵੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਾਨੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਦਾ ਮੀਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੇ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਤੋੜ ਕੁੜੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਇਹ ਜਨਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਚ ਕੀ ਰਕਾਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਰਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਈ ਔਜਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਘੇਰ ਕੁੜੇ ਗੌਲਦੇ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹੁਣ 12 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫੈਨ ਇੱਕੋ ਨਾਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਤੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ 36 जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा सुनी मैंने बातें बहुत है रातें काटी पूछे मेरे साथी कौन थे बातें बाकी लेकिन बाकी मौन थे ना है साथी मेरे को जज्बाती लौंडे असली था तब असली है अब असली में फर्जियां भरती है सब गैंग लगे फौज या वर्दी में सब हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स चाहिए बस इनको आसानियां चाहिए बस नाम पर करना है काम नहीं कल पहन के घूम रहे थे निक्कर आ जा रहे हैं डिस पर ये कोई आसाम नहीं फोन रिंग रिंग बहुत बिजी टोपी है गूची जैकेट मॉन्क्लेजी दिल्ली का लड़का चल रहा है सिटी पर मुंबई में जाते दिन नो आगे बिजी बैक ऑन इट I'm back on it मुझे कभी नहीं मिले मेरे accolade aim रहे accurate you can put a cap on it she can get tap if she double tap on it flow पे नाज है धोखेबाज है लोग थे वो इलाज जो फैलाते रोग रोते आज जब खोते आज नोट हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा डॉलर तेरे चैन का कत्ल मुझे रहना सफल ये है मेहनत का फल बेटा श्रीनगर जैसे गहरा है दल फ्लो बहता है जल जैसे ज़ैनब का दल बेटा नो एक्टर कैंपेन कैप्चर करूं जब मैं स्टैक वर्ड जाके नीचे ट्रैक बर्न देखा पैटर्न इनका है बैकवर्ड ऑलवेज न्यू फिश हु लिट जैसे पैकर्ड मुझसे मिल के अचानक सारे चिलते यहाँ भागे चूहे बिल में हैरानी होती स्किल पे देखे कितने जो आए मुझसे भिड़ने बना दी मैंने फिल्म में हिरानी लगू स्किल से इरादे दिखाता वादे नहीं करता इन हाथों में ताकत है बातें नहीं करता ये करते इबादत में आदर नहीं करता वो करता शरारत पर नारद नहीं लगता जूता जबानी you know how I'm stepping आताना है सीना कटाना ये weapon they know how I kick it kazama ये taking got Dell on my back like Lana I'm rapping हानिकारक बार यानी घातक बार भारी आतंकबाज जारी भागम भाग जाली नाटकबाज मारी हाथों हाथ भारतवासी आज करते भारी राज जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा
काफी तेज कार चले, मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फ्यूचर में स्टार बड़े, चेहरे पर स्कार पड़े, फोनों पर तैयार खड़े, मेरे लिए अंदर है वो तभी राजा बाहर खड़े, कोई ना लगाम लगे, रुकने पर जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके पर 2 नंबर काम लगे। या ये लाइनें अब नहीं फ्री की, ये जानना चाहते कहाँ से सीखी, तरकीबें नहीं पा रहे पकड़ मेरा, ब्लूप्रिंट मैंने बनाया 3D, they can't afford, they won't believe me, I'm a genius यार, I'm so freaky, she call me सीधा दुबई से करी इंतजार हो रहा जो हबीबी, वो कॉल पे कर रही थी ही, वो वैसे थी बंदी किसी की, वो देखती ख्वाबों में अपने, मैं उसका ट्रैक वो मेरी की, मिला जो ब्रेक बना दी मूवी, कर्मा भी जो बीट की चूची, हल्की से जो पकड़ी बेस लाइन में बना आइंस्टाइन, तेरी मर गई खोपड़ी, रैप करेगा सतू से, मैं तो करता हूँ म्यूजिक, मैं लिखता हूँ प्रोशीट, मैं बनता नहीं वहाँ जहाँ यूज से, लाइफस्टाइल एक्सक्लूसिव, बनी जो मिसाइल ले लो, चेहरे पे स्माइल ले लो, हल्की सी छाई लगे हिटर और फिनाइल ले लो, भाई आजा रोल कर रहा हूँ मैं, तू बूम कर ले। रात भर काम चले भांग चले भाई रहते पढ़ते हैं माइक पे दहाड़ते हैं जानते हैं नाम चले किंग कर्मा सुना डुओ काफी गैंगस्टर है बैटमैन काली गड़ी घूमे जैसे फैन थारे नाम जैसे बादशाह बैड बॉय कहने लगे शहरों में फैनों की फैमिली के जाम लगे कम यहाँ जाम लगे ज्यादा लगे माल जब वो ब्राउन बॉयज टके उसे कैडबरी ब्रांड लगे फिर बोली खाते चीज केक जूस केक मैं बोला क्या चूस केक चीज केक वो बोली देन जीज बेब प्लीज वेट माय आइसक्रीम पार्लर दीज डेज अप टू स्किल्स टेक मूव्स टेक मुक्के मुंह पे थूट पे ये बंदे फेक हैं टू फेस मास्क के मुंह पे प्रूफ पे किंग वाली बैंड थी मेरी वाली फ्रांस थी बालकनी पे करे वो गैग वो ना सांस लेती बाइयों के साथ रिवर्स के 50 पीटी पैसा लगा हाथ पर हाथ की ना खाद मिटी किया प्यार सजा लाजमी थी गानों के जरिए आप बीती ले बताई ने आगे की ब्रो आइए 7 गोल्ड शिट रफ अभी तो अबे यार सोची ये बंदे हो गए शिक शेक शेक मेरे पार्ट्स करे टिक टैक तो घोड़ा मेरा ऑटोमेटिक गड़ा हिट दैट टॉप मोनोपोली मूव्स मोनोपोली फ्लो सोच एक दिन सोचू फक दिस ब्रेक 2 महीने में डाल दूं मैं 6-7 ड्रॉप और गलती से कर दूं ये हाइप तेरी चौपट गो टू स्लीप बिग स्वीट ड्रीम फक ऑफ फोकस स्वीट मेरे घर जैसे मॉल देहरादून वाली सर्दी में सेक्स का माहौल लौंडे खाली बिली घर बैठे चौधरे में फॉल पोकेमॉन जैसी बिल्ली है कि घूमरी का सॉल पोकेमॉन जैसी बनियों की घूमरी का सॉल पोकेमॉन जैसी ये तेरी स्ट्रिंग इन द बॉल्स पिकाचू केला चू रखूं गेम कंट्रोल में ऐश में मिला दूं केलो पेस्ट कंट्रोल लाइक दिल्ली वाली मेरी खारी पीटा बॉम्बे वाली करे टॉर्क करती योगा सीखा फ्लेक्सी इतना के बंदी में से बला हटा दो बंदी बिना एबक करेगी चिकतीता some tricks some chica some sweetheart सोच भी नहीं सकता तू thinks that she does club जाए कब जाए flow दो ड्रिंक्स बार ट्रैक सूट करे खींचे लाइंस Adidas गांड पैक करी कोई बोला ही नहीं मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने लिखी बस 2 लाइन ही अभी बसता तो खोला ही नहीं कैसा रैप जब रोला ही नहीं ना बातें करो गोल आएगी मेरे बैट पे ही बॉल आएगी पूरा स्टेडियम पैक कोई दो राय नहीं टेकूंगा नहीं घुटने जब मौत आएगी ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੀਵਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾ ਉੱਚੀ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਦੀ ਬੈਠਾ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ ਭਲੇਖੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ
ਜੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਜੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਨੀ ਜੋ ਲੱਗਾ ਡੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫੇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੋ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਫਲੋ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ ਅਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. It's like welcome to the region of Peel, it's getting scary. I've been on road for the cheese, I love dairy. I've been screaming fuck the ops, I know they hear me. I've been gripping on my steel, fuck if they fear me. Don't die playing Superman, you ain't Clark Kent. Motherfuckers thought I died, but I ain't start yet. Where I'm from, it's no face, no case. You can get your top lit up like you sitting in the rape, I'm nasty. Got hits like that homie from the Grassy. My homies in the front with two bitches in the backseat. Paparazzi harass me, shit getting flashy. All my homies down the ride just like a taxi. Martin the Munda, Brampton Chagunda. On the 410, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ. Bumping Tupac, ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਾ. I don't listen to you peasants, man, I do what I wanna. ਜੱਟ ਕੈਮਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ. ਵੈਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਦੇਖ ਸਹਿਮ ਸਹਿਮਾ. ਉਹ ਦੇਖ ਔਖਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ. ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਭੱਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ. Look at me now, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ. Sipping champagne like I know Drake. Tension ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਆ chill. Brampton ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲ. It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. 410 feet down, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਚੋਬਰ ਪਲਾਜੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਰਿੰਗ 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 ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ ਫੋਨ ਤੇ ਟਰਾਟੋ ਇੱਕ ਨੱਟੀ ਸੱਟੀ ਜਾਵੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਘੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਪਰਾ ਤੇ ਨੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੋਬਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੁੜਕਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਭਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗੀ ਚ ਟਰੱਕੂਆਂ ਤੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਆ ਟਿੱਲਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬੱਜੇ ਅਣਖੀਲਾ ਕਿੱਲ 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 ਇਹ ਆ ਕਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲ ਹਸਲ ਬੇਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੋਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ It's 410 ਬੇਬੀ ਇਹ ਆ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਸਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਆਪ ਆਓ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੂਰੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਅੱਬ ਸੈਸਡ ਨੇ ਕਾਪ ਆਓ ਪਾਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕਰੈਕ ਸਟੀਲ ਮੱਕਲ ਹੋਗਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਟਰੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਗੈਪ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. I want it all. It's 410, I'm on the 410. Sidhu Moosewala, Sonny Martin. Je tenu bello ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ
ਵਾਂਗੂ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ बड़े बोलते मित्तरां दे केस मामे ढोलते करदे अजे सारे रोलते रलदे ना पेस साडे आउंदे करदे ना पेस नी मैं भर के क्लिप डिक्की रखिया टूलियां तो देख के चकी तू साडे अत्तरे असूल असी बड़े आ पढ़ाई जेड़े पढ़दे स्कूल तुसी चलदे ने ते साडे रूल नी मैं हाथ फेर सिर ते बिठाए वैली नी रखी मक सिक्कियां दी गैंग कैली नी ते बूथा ताणी करदे आ नाम टैली नी ओ देख टेलीविजन न्यूज़ फैली नी ओ चंगी तरह अपने नी पै गया है शोर एवें काका परखी ना मित्तरां दा जोर नी गब्बरू दी बरकत ते कंबदा फ्लोर पहलों ही सी दस्सिया कि साडी गल होर है बड़े बोलते मित्तरां दे केस मामे ढोलते करदे अजे सारे रोलते रलदे ना पेस साडे आउंदे करदे ना बड़े बोलते मित्तरां दे केस मामे ढोलते करदे अजे सारे रोलते रलदे ना पेस साडे आउंदे करदे ना पेस हुण भालदी आ फेम तेरी मूवी भी ना चलदी चवल जनानी भौंकण नैट उत्ते गलदी नी फड़ लीडरां दे हत्थ फिरे चलदी नी फिर भी ना चलदी तू फिर भी नी अख जिथे रखदा छड़े ना कख दा लंडूआं दी किकली पवाई रखदा नी मुफ्त च करदा इलाज शकदा नी वैसे साडा एक मिंट लखदा ओ बाउंस नहीं हुंदे मित्तरां दे चैक नी उच्ची उच्ची सुनदे आ लगे डक नी ओ शोहां बाहर लगी लाइन करी जैक नी जोर ला लो झुकदी कदे भी नैक नी बड़े बोलते मित्तरां दे केस मामे ढोलते करदे अजे सारे रोलते रलदे ना पेस साडे आउंदे करदे ना बड़े बोलते मित्तरां दे केस मामे ढोलते करदे अजे सारे रोलते रलदे ना पेस साडे आउंदे करदे ना रंट पूरा दबदबा तेरे यार दा रख के आ माटी सी उत्ते मारदा नी जिगरे ना भरे आया किथे हारदा ओ आदत पुरानी रहिंदा हिक्का साड़दा गाना कल्ला कल्ला हिट ना कोई करदा आ मिस नी मैं भोकदा तरक्की नाल करदा ना देसी ओ ग्रुप विच बाहर जेड़ी करदे से हिस मारे फिस फिस जिवें चल मच्छरां दी हिट मित्तरां दे केस मामे ढोलते करदे अजे सारे रोलते रलदे ना पेस साडे आउंदे करदे ना बड़े बोलते मित्तरां दे केस मामे ढोलते करदे अजे सारे रोलते रलदे ना पेस साडे आउंदे करदे ना पेस बोलदे आ बुकदे थोड़ियां पतलो खड़िया नी झुकदे थोड़ियां पतलो नी मौत आजे लुकदे थोड़ियां पतलो नी इन्हां कोलों रुकदे थोड़ियां पतलो बुल्ले फिरां लुटदा नी नेर की सवेर की नी तेरे आला सिर जट टीसी आला बेर की नी कदे साडे कुर्ते नूं हुंदियां सी टाकियां नी अज भी बा LBJ पा लिया तां फेर पैसे हैगे मुक्करे थोड़ियां पतलो शौकी बेशुकरे थोड़ियां पतलो नी तैनूं थोड़ी गलत नॉलेज मिलिया नी मेहनतियां फुकरे थोड़ियां पतलो आओ किन्ना कुछ खट्टिया नी लईयां नी वधाइयां कदे इना के देखियां नी असी नी दिखाइयां कदे गन्ना उत्ते टॉर्चां नी हॉर्स ते फॉर्शां नी यारां कुड़ी हुंदियां ने असी नी चलाइयां कदे गाने वांगू मुक्कदे थोड़ियां पतलो कल्ले सोहणे लुकदे थोड़ियां पतलो नी इना वांगू फुकदे थोड़ियां पतलो नी इना कोलों रुकदे थोड़ियां पतलो हुण रहिंदे टप्पदे रकाने कदे टिके नी एह नी जेड़ा सिख
ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰੈੱਡ ਬਾਟਮ ਕੁੜੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਪੱਟਦੇ ਸੀ ਉਖੜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਨੀ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਟੁਕੜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਚੱਕੇ ਨਾ ਸੈਲਫ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੌਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਾਲੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ ਆ ਡੁੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰਿਕਾਰਡੀ ਇਹਨੇ ਤੋੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਣੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਥਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਨੀ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਫੁਕਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ Yeah, fucking boy. I'm the best ever. I'm the most ruthless, vicious, and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. आओ प्रो कैसे फकने हार दिए लाइफ टाइम दी पेंशन मंगता है नहीं मारी जनानी वांगू नहीं साले मैथों टेंशन मंगता है नहीं बिना गलों विच आउणा चाहुंदे साडे राइवल दे नहीं हार दिए जिन्ना ना कंपेयर करे साडे लेवल दे नहीं हार दिए जिन्ना ना कंपेयर करे साडे लेवल दे नहीं हार दिए It's like who else you really know that be setting the bar. They just dropped a couple songs, but they think they're a star. We don't run from competition, we don't run from the law. If you tryna level up, I'm the one that you call. I just do this for the love, I don't do this for the bag. They said meet me at the top, I looked around like where y'all at. Pardon if I laugh, fuck you if you mad. I could lose everything and still double what you have. It's like they watching all my moves and they copying my style. They say they really in, but I know they in denial. I'm sitting at the top and I know it's been a while. I know it's been a while. ਪਿੱਠੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਗੀਤ ਚਲਾ ਲੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੀਲੀਆਂ ਫੀਲੀਆਂ ਜਿੰਟੂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਿੱਦੇ ਨੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
पे बंदी तेरी टोप पे सिस्टम छोड़ के जो गए मुझे I don't really miss them. दो बार बनाए मैंने करियर लोगों के that's why I don't really diss them. सोल काम गाड़ी तीनों काली काली रात में लाखों उड़ा दूं लोगों पे जज्बात में मेरे जैसे पागल ही घूमे मेरे साथ में गहरे हैं मतलब मेरी हर बात में बॉम्बे में बैठे बॉलीवुड वाली चांदनी जोर लगा लिया आते हम हाथ नहीं रैप और वाली हमें कोई बात नहीं घर खाली हाथ आए ऐसी कोई रात नहीं हाथों में विस्की है काम किए जो सारे रिस्की है सीने सड़क पे ही बनेगा आज गाड़ी हटा लो ये किसकी है गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें खोल मिलाए सुनियो चाल चलन दे हर चाकू बच के रहियो लड़के डाकू गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें खोल सुनियो चाल चलन दे हर चाकू बच के रहियो लड़के डाकू हिला नहीं टॉप से ना ही कोई प्लान है हेटरों को ढूंढू जैसे आई मेरी डैन है ऐसे भी शहर हैं जिनमें हम बैन है काली डबल आर इंटीरियर टैन ये जेंजी के 14 लो फाइट से नहीं बाहर आ रहे कंधे इन लॉन्डो के गेम नहीं संभाल पा रहे मरने को पड़ी बाजी फिर भी न मार पा रहे कल्ले नहीं आ रहे हम साथ में तूफान ला रहे हाइप है कितनी ये शो मेरा गवाही भरे कुछ भी न करे बट करे तो तबाही करे गाड़ी और काम में लगते ब्रेक नहीं ज्यादा न दिखे पर दिखे तो फिर देख नहीं हाथों में विस्की है अपनी थोड़ी सी खिसकी है हमको रोक ले जो गैंड में दम बैठे किसकी है गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें खोल मिलाए सुनियो चाल चलन दे हर चाकू बच के रहियो लड़के डाकू गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें खोल मिलाए सुनियो चाल चलन दे हर चाकू बच के रहियो लड़के डाकू Guess who's back? ADY. Eddie never in the house with me. Yo. इसी से गाड़ी के बजे ऊपर हैं भाई लेवल मत मिलावा हम तुमसे ऊपर हैं भाई बदमाशी करे जो तेरा यार वाके ट्यूटर हैं भाई कल इसी से गाड़ी के बजे ऊपर हैं भाई वो जेंटलमैन हमें बालिक देसी हम मैंने पटाई तेरी छोरी का लेसी हम नीरज चोपड़ा तू लियोनल मेसी जिसे बुरा लगे वाकी ऐसी की तैसी बचपन से स्टार और लाइट से फ्लैशी दिक्कत ना हमें कोई ऐसी वैसी गुरु ऊपर वाला हमें वेरी ब्लेसी फुल पावर लौंडे एंडी नो बकैती मेरे गैंग में ना लौंडा कोई चॉकलेटी ठाक के ले जाऊं जैसे बुक्का रेडी तेरी गर्लफ्रेंड बोले मुझे हिट मी डैडी मगर दे तू डोज करे अरे प्रॉब्लम बता दे तेरी कर देंगे सोल्व मारे आगे पीछे दुनिया यो करती रिवॉल्व 22 साल के हैं लौंडे लगे देसी आर्नोल्ड तेरे फेस जिना डोला हाइट 6 फीट टोल कल इसी से गाड़ी के बजे ऊपर हैं भाई लेवल मत मिलावा हम तुमसे ऊपर हैं भाई बदमाशी करे जो तेरा यार वाके ट्यूटर हैं भाई बच के रहिए गाड़ी में बैठे गुजर भाई दार फॉर्च्यूनर के लग तेरी तोल गरीब से ना छीनी रोटी दिल अनमोल मारे ठेके अंबारे और है जी कई मॉल आज शॉपिंग करा तू पहले आई लव यू बोल मैं प्रोड्यूसर नहीं ढूंढता वो मुझे ढूंढते हैं आज भी हम से बात खुला घूमते हैं हम उनको नहीं पूछते जो नोट चूमते हैं नई गाड़ियों की स्मेल रोज सुनते हैं माथे तेरे जैसों के यहाँ रोज फूटते हैं दिल तेरे जैसों के यहाँ रोज टूटते हैं लड़कियों की तरह साले रोज रूठते हैं अरे आटा साली प्रॉब्लम ये सब चूसते हैं बेटे नारे मेरे नाम के यहाँ रोज गूंजते हैं करते हो काम क्या ये सारे पूछते हैं अरे पग पैंट जो दो हम तो बैंक लूटते हैं बट कितने देगा काम बता पहले पूछते हैं अरे बॉडी में जान है और गांव के प्रधान है बापू पुलिस में और ताऊ किसान है रिटायर फौजी और लगता पठान है दादा के हाथों में घर की कमान है 80 का बुढ़ा पर लगता जवान है बांधे जब मोड़े तो फेल सर उठाना है भाई चूल्हे की रोटी और खादी की धोती चैन से खाओ है भाई मार के पलोती यारी सारे तगड़े और मेरे जिगरी हैं भाई
जिए खुल के जीवन में बेफिक्री है भाई। कोई बैठा कनाडा में कोई इटली है भाई। लौंडे सारे गल के मेरे जिगरी हैं भाई। शीशे काटी के बचे ऊपर हैं भाई। लेवल मत मिलाना हम तुमसे ऊपर हैं भाई। बदमाशी कर दे तेरा यार के ट्यूटर हैं भाई। बच के रहिए गाड़ी में बैठे गुजर हैं भाई। बच के रहिए गाड़ी में बैठे गुजर हैं भाई। लेवल मत मिलावा हम तुमसे ऊपर हैं भाई। बदमाशी करे जब तेरा यार वके ट्यूटर है भाई। बच के रहिए गाड़ी में बैठे ना तेरे को पाए। पता तेरे रंग होण शर्त तेरी संग मंगणा दी मंगदा सच्चाई दी गुच्छियां लाहौर तो जिੱਤੀ जाके नाम साडा विच मिलो खंगरे ना दुखियां मैं हੱਥ के नी चुक्की मंजी ठोकदे आ सुक्की सुक्की करदे आ लहर जिੱਥੇ पड़दे आ पैर फिर मचदा आ कहर वैरी वैर भुलदे गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे आ गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे आ गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे। चले अपनी ही तोड़ देंदे आकड़ा ने भोर बड़ी देखिया ने नारा तेरे वर्गी नहीं होर सच्ची दिलां दी तू चोर जट वेचे ना जोर लगा बत्ती बोर डब देंदा बंदा इन्हें चोड़का दी करकी कलोल मैनू लगे तेरी तोड़ जट वैलियां दा वैली पिछे फिरदी लगौड़ ना कोई असले दी तोड़ 24 घंटे नाल मेरे यारां दे यार लगे घर परिवार पूरा करदे प्यार अते करदे वपार कुछ बने कलाकार रखे अतरे विचार ऑटोमैटिक आ दोनों हथियार नाले कर ऑटोमैटिक आ दोनों हथियार नाले कार जदों चलदे आ बिल्लो ना को गैर घुलदे नी गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे। गड्डी 410 उत्ते 210 दी स्पीड ਜਾਂਦੀ ਕੱਢਦੀ ਆ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੀਟ ਮੁੰਡਾ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਗੀਤ ਵੇਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਜ ਤੋਂ ਗੀਤ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਗੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁਣ ਬੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ टायर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे। बोले एक होगा दो और दो होगा चार 20 काली गाड़ी 100 बंदे मेरे साथ आना लो करना 100 मिली पार 1 मिली 2 मिली 3 मिली 4 आने दो ये होते परेशान चलता मेरा नाम जैसे चलता मेरा काम आने दो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 आओ गल सी दुबई नाल शेख भी सी कई उस तो बाद मैं कोलंबिया फ्लाइट फड़ जिथे जावां उत्थे यार ही कमाई जट ने तैनूं लगदा कि पैसे दी कमाई कर लई चार जट दी सलो मैनू देखो गौर नाल कला कला पुत तुरे तोरा टॉर नाल याद ही ना मेरी किथे तक मार अखां विचों पड़ लवां बंदा मिले सार मंगे चादरां दी जोड़ी इहो मसला घोड़ी मंगदी बदामां आला तसला
ਮਾਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਸਵਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਲੋ ਮੁੰਡੇ ਹਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਨੋ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ ਲਵਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ होगा दो दो होगा चार 20 काली गाड़ी 100 बंदे मेरे साथ ऑन लो करना 100 मिली पार 1 मिली 2 मिली 3 मिली 4 आने दो मैं फूकना Yo, how's the streaming going? Yeah, it's going good, bro. It's going good. I don't have much time to about this. I have to stop by. Engineer Gaming, yes sir. Christopher Ravenstein. I don't have a second monitor. I have, but I don't have that much strong GPU to connect my second monitor. So if I do that, my PC is gonna start lagging. So I can't read your chat. Please be patient. Enjoy the gameplay, maybe. Yeah, who cares about gameplay? किया 6 में लैंडिंग गंजी काला रखते और ब्लैक फोर्सेस मैचिंग म्यूजिक पहला रखते हमसे ना होता एक्टिंग हम पैसा उड़ाते फिर अब बोलते फैशन हम सही में हुड से जैसे घर में राशन तेरे बाप के बेल्ट सा हर वर्स है स्लैपिंग एक्स्ट्रा दाते तुझ में इसलिए करता कैपिन हम गाड़ी उड़ाते साउथ फिल्म की एक्शन कभी खाऊ गली कभी चकते हम बैस्टिन ना किया शादी शो Dollar sign one time. We back. Hold on. Actually, you know what? चला देना ये यार जब पूछे कौन है best, it's me I guess. जब पूछे obtuse best, it's me I guess. ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा बोलाएगा टाइम नहीं मेरा अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा मैं भाई नहीं तेरा आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा बोलाएगा टाइम नहीं मेरा मांग रहे टाइम में रिप्लाई नहीं दे रहा जब पूछे कौन है बेस्ट it's me I guess जब पूछे obtuse best, it's me I guess जब पूछे कौन है बेस्ट it's me I guess जब पूछे obtuse stress it's me I guess मुझे याद है वो दिन जब मैं और मेरे day ones थे on the pavement trying to get payments कभी छोड़ के गए नहीं game up now they wanna hate us just to get famous इनके गाने नहीं चले they blame us जैसे खुद लाचार ये बेबस मांगी नहीं help no favors आज धनतेरस for a new stainless अचानक से बने ये lyrical कुछ साल पहले commercial थे mic पर I can rap circles around these clowns पर करता नहीं rap in ciphers ये touch है Midas दिल की vibe पर got more bar than lifers इन्हें लग रहा है ये पैसा कमा रहे हैं बहुत पर I'm blow these bags like pipers जब कृष्णा drops लगे occasion मेरा ध्यान है काम पे हम बोलते कम मेरा दाम है चांद पे लो कोटेशन जब आमने सामने नो लोकेशन ले रहे shots they miss me इसे लग रहा है हाइप है डिस्की जाके कर ले डिस यू स्टिल won't be shit हाँ होगी नहीं हाइप कभी इसकी मुझे पता इन्हें हो रही है टेंशन मुझे क्यों इन्हें हो गई ऑब्सेशन बस चाहिए इन्हें थोड़ी अटेंशन पर करूँ ना स्टोरी पे मेंशन जब पूछे कौन है बेस्ट it's me I guess जब पूछे obtuse stress it's me I guess जब पूछे कौन है बेस्ट it's me I guess जब पूछे obtuse stress it's me I guess इनकी सालों से जली थी मेरा लेवल है ऊपर तो हम में ना करीबी मुझे मिली यहाँ बड़ी जी बीफ के बाद ये सारे क्यों बन जाते हरी जी सिंगर तू है सिंगर शूटर एक कॉल पे जब बजता है रिंगर तेरी गर्ल है साथ यू कैन ब्रिंग हर शी कैन कम फाइनली बी विद अ विनर रखा है हल्का हाथ लेकिन काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ कल जो सफलता कल्पना थी आज रात को कल्पना है घर पर साथ I'm still on top मैं ना आया नीचे 3 months no drop फिर भी higher reach है grew up on a set पर better get checked if you ain't with a deck जैसे IIT से मेरा प्यार था प्योर पर भाव नहीं दी और भाई मैं थी छोड़ना बात एक की और गर्ल आरों कार पे DM आई कार पे दी और अब छपरी है खबर है कवर पे क्या छपरी है कफन और कबर में रह गए पीछे में आ रहा नहीं पकड़ में रियल वंस रहते हैं बगल में साथ नहीं दिया था स्ट्रगल में अब काम में दे रहे हैं दखल ये कीचड़ से निकला ये कमल है कभी था हाथ न साथ लो गवर्नमेंट जब पूछे कौन है बेस्ट it's me I guess जब पूछे obtuse stress it's me I guess जब पूछे कौन है बेस्ट it's me I guess जब पूछे obtuse stress it's me I guess
बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा बोलाएगा टाइम नहीं मेरा अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा मैं भाई नहीं तेरा आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा बोलाएगा टाइम नहीं मेरा मांग रहे टाइम में रिप्लाई नहीं दे रहा It's me, I guess. Show mercy on it. ਦੋ ਘੋੜੇ ਮਹਿਗਨਾ ਨੀ 4G ਵੈਗਨਾ ਨੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਚੱਕੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ 36 ਐਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਰ ਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ 36 ਬਲ ਕੱਢ ਤਾਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਰੀਜ ਹੌੜਾ ਰੁੱਖਿਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਭਲਾ ਨੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਬੈਠਾ ਡਬਲਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਹੁਣ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਝਾਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਰੁਕਾ ਨਾ ਰਕਾਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਾਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਨੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣ ਖਾ ਗਈ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦਬਿਆ ਰਕਾਨੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਮਿਲਾਨੇ ਅਫਗਾਨੇ ਵਾਲੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤਰਜੀ ਰਕਾਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਮਹਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸੌ ਮੰਗਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਚੇਂਜ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਕਾਨੇ ਨਿਤ ਯੂਈ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਕਾਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਲਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਸਮਾਧੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰਕਾਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਮੱਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਟਾਂ ਹੋ ਲੰਗੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੈਮਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੁਣ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜੱਦੀ ਮਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬਣਾ ਗਏ ਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਬੀਬਾ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾਰਾ ਠਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਰੱਖਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਪੀਂਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਟੂ ਕਾੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ 1 ਲਾਤਾ ਹਲੇ ਨਵੀਆਂ ਫਰਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਕ ਮੋੜ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕੀਆਂ ਐਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਰ ਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ 36 ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਜਨਾਮੇ ਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲ ਸੁੱਕਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਵੇਂ ਨੱਟੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੌਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਨੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਰਕਾਨੇ ਚੀਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਕਾਨੇ ਕਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰੋਟੇ ਤੇਰਾ 100 ਤੋਂ ਪਰ ਪਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਢਿੱਲੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਵਾ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਰਕਾਨੇ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਬਰੇਟਾ ਦਿੰਦੀ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਾਫੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡਾਲੀ ਥੋੜੇ ਹੰਬਲਾਂ ਰਕਾਨੇ ਲੈਂਬੋ ਨੀਵੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਾਨੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਦਾ ਮੀਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੇ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਤੋੜ ਕੁੜੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਇਹ ਜਨਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਚ ਕੀ ਰਕਾਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਰਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਈ ਔਜਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਘੇਰ ਕੁੜੇ ਗੋਲਦੇ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹੁਣ 12 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਰ ਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ 36 जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज तो भी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज तो भी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा सुनी मैंने बातें बहुत है रातें काटी पूछे मेरे साथी कौन थे बातें बाकी लेकिन बाकी मौन थे ना है साथी मेरे को जज्बाती लौंडे असली था तब असली है अब असली में फर्जियां भरती है सब गैंग लगे फौज या वर्दी में सब हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स चाहिए बस इनको आसानियां चाहिए बस नाम पर करना है काम नहीं कल पहन के घूम रहे थे निकर आ जा रहे हैं डिस पर ये कोई आसाम नहीं
फोन रिंग रिंग बहुत बिजी, टोपी है गुची, जैकेट मॉन्क्लेजी, दिल्ली का लड़का चिल रहा है मस्त सिटी पर, मुंबई में जाते दिन नो आगे बिजी। बैक ऑन इट, I'm back on it, मुझे कभी नहीं मिले मेरे एक्युलेट, एम रहे एक्यूरेट, यू कैन पुट अ कैप ऑन इट, शी कैन गेट टैप, इसी डबल टैप ऑन इट, फ्लो पे नाज है धोखेबाज है लोग, दे वो इलाज जो फैलाते रोग, रोते आज जब खोते आज नोट, हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो जूता, जापानी ये पतलून, अरमानी सर पे आज, टोपी गुची फिर भी दिल, हिंदुस्तानी मेरा जूता, जापानी ये पतलून, अरमानी सर पे आज, टोपी गुची फिर भी दिल, हिंदुस्तानी मेरा डॉलर साइन तेरे चैन का कत्ल, मुझे रहना सफल ये है मेहनत का फल बेटा, श्रीनगर जैसे गहरा है दल, फ्लो बहता है जल जैसे जैन का दल बेटा, नो एक्टर कैंपेन ना कैप्चर करूं जब मैं स्टैक वर्ड्स आई कैन मेक द ट्रैक बर्न, देखा पैटर्न इनका है बैकवर्ड, ऑलवेज न्यू फिश हु लिट जैसे पैकर्ड, मुझसे मिलके अचानक सारे चिल थे, यहाँ भागे चूहे बिल में, हैरानी होती स्किल पे, देखे कितने जो आए मुझसे भिड़ने, बना दी मैंने फिल्म में हिरानी लोग मुश्किल से, इरादे दिखाता वादे नहीं करता, इन हाथों में ताकत है बातें नहीं करता, ये करते इबादत में आदर नहीं करता, वो करता शरारत पर नारद नहीं लगता, जूता जवानी you know how I'm stepping, आताना है सीना कटाना, ये weapon they know how I kick it कज़ामा, ये Tekken got Dell on my back like Lana I'm rapping, हानिकारक बार जानी घातक बार भारी, आतंकबाज जारी भागम भाग जाली, नाटकबाज मारी हाथों हाथ, भारतवासी आज करते भारी राज, जूता जापानी ये पतलून, अरमानी सर पे आज, टोपी गुची फिर भी दिल, हिंदुस्तानी मेरा जूता, जापानी ये पतलून, अरमानी सर पे आज, टोपी गुची फिर भी दिल, हिंदुस्तानी मेरा। चले मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फीचर में स्टार बड़े, चेहरे पर स्कार पड़े, फोनों पे तैयार खड़े, मेरे लिए अंदर है वो तभी राजा बाहर खड़े, कोई ना लगाम लगे, रुकने पे जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके पर 2 नंबर काम लगे, या ये लाइनें अब नहीं फ्री की, ये जानना चाहते कहाँ से सीखी, तरकीबें नहीं पा रहे पकड़ मेरा, ब्लूप्रिंट मैंने बनाया 3D, they can't afford, they won't believe me, I'm a genius यार I'm so freaky, she call me सीधा दुबई से करे इंतजार, हो रहा जो हबीबी, वो कॉल पे करी थी, वो वैसे थी बंदी किसी की, वो देखती ख्वाबों में अपने, मैं उस पटरे को मेरी की, मिला जो ब्रेक बना दी मूवी, कर्मा बिच बीट की चूची, हल्की से जो पकड़ी बेस लाइन में बना आइंस्टाइन, तेरी मर गई खोपड़ी, रैप करेगा सतीश से, मैं तो करता हूँ म्यूजिक, मैं लिखता हूँ बुशिट, मैं बनता नहीं वहाँ जहाँ यूज से, लाइफस्टाइल एक्सक्लूसिव, बनी जो मिसाइल ले लो, चेहरे पे स्माइल ले लो, हल्की सी जाए लगे हिटर और फिनाइल ले लो, भाई आजा रोल कर रहा हूँ मैं, तू कर boy रात भर काम चले भांग चले भाई रहते पढ़ते हैं माइक पे दहाड़ते हैं जानते हैं नाम चले किंकर मासूम टुओ काफी गैंगस्टर बैटमैन काली गाड़ी घूमे जैसे पैंथर है नाम जैसे बादशाह बैड बॉय कहने लगे शहरों में फैनों की फैमिली के जाम लगे कम यहाँ जाम लगे ज्यादा लगे माल जब ब्राउन बॉयज थे उसे कैडबरी ब्रांड लगे फिर बोली खाते चीज केक जूस केक मैं बोला क्या चीज केक वो बोली देन चीज बेक प्लीज वेट माय आइसक्रीम पार्लर दीस डेज अप टू स्किल स्टेक मूव टेक मुक्के मुंह पे टूट पे ये बंदे फेक हैं टू फेस मास्क के मुंह पे प्रूफ पे किंग वाली बैंड थी मेरी वाली फ्रांस थी बालकनी पे करे वो गैग वो ना सांस लेती बाइयों के साथ रिवर्स के 50 पेटी पैसा लगा हाथ पर हाथ की ना खाद मिट्टी किया प्यार सजा लाजमी थी गानों के जरिए आप भी की ले बताई ने आगे की ब्रो आइए 7 देख 7 गोट शिट रफ अभी तो अबे यार सोची ये बंदे हो गए शेक शेक मेरे पार्ट्स करे टिक टैक तो घोड़ा मेरा ऑटोमेटिक गड़ा हिट दैट टॉप मोनोपोली मूव्स मोनोपोली फ्लो सोच एक दिन सोचू फक दिस ब्रेक 2 महीने में डाल दूं मैं 6-7 ड्रॉप और गलती से कर दूं ये हाइट तेरी चॉप पर को स्वीट एक स्विचिंग फक ऑफ फोकस सूट मेरे घर जैसे मॉल देहरादून वाली सर्दी में सेक्स का माहौल लौंडे खाली बिली घर बैठे चौधरी में कॉल पोकेमॉन जैसी बंदी है क्यों तुम्हारी कसम पोकेमॉन जैसी बंदी है क्यों दूंगी का सॉल्व पोकेमॉन जैसी ये तेरी स्टिंग इन बॉल्स टिका चू के चू रखूं गेम कंट्रोल में ऐश में मिला दूं केलो पेस्ट कंट्रोल लाइक दिल्ली वाली मेरी खारी पीटा बॉम्बे वाली करे टॉप कटी होगा सीखा फ्लेक्स इतना के बंदी में से भले हटा दो बंदी बिना ऐप करेगी दिक्कत some tricks
some cheek some sweetheart सोच भी नहीं सकता the things that she does club चाय कप चाय flow दो drinks bar track suit करे खींचे lines Adidas गाने बैठ करी कोई बोला ही नहीं मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने लिखे बस 2 लाइन ही अभी बसता तो खोला ही नहीं कैसा रैप जबर रोला ही नहीं ना बातें करो गोल आएगी मेरे बैट पे ही बॉल आएगी पूरा स्टेडियम पैक कोई दो राय नहीं देखूंगा नहीं घुटने जब मौत आएगी ਪੁੱਛੀ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ ਭਲੇਖੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾੜਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਜੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾੜਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੱਗਾ ਡੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫੇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੋ ਅੱਛੀ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਫਲੋ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ ਆ ਬਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ It's 410, I'm under 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm under 410. It's 410, I'm under 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm under 410. It's like welcome to the region, the PO is getting scary. I've been on go for the cheese, I love dairy. I've been screaming fuck the ops, I know they hear me. I've been gripping on my steel, fuck if they fear me. Don't die playing Superman, you ain't Clark Kent. Motherfuckers thought I died, but I ain't start yet. Where I'm from, it's no face, no case. You can get your top lit up like you sitting in
fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. beat down ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਰਿੰਗ 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 ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ ਫੋਨ ਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ਇੱਕ ਨੱਡੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਰਾ ਤੇ ਢੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੋਪਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੁੜਕਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗੀ ਚ ਟਰੱਕੂਆ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਆ ਢਿੱਲਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬੱਜੇ ਜਣ ਖੀਲਾ ਕਿੱਲ 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 ਇਹ ਆ ਕਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲ ਹਸਲ ਬੇਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੋਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਇਟਸ 410 ਬੇਬੀ ਇਹ ਆ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਸਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਆਪ ਆਓ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੂਰੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਅਬ ਸੈਸਡ ਨੇ ਕਾਪ ਆਓ ਪਾਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਰੈਕ ਸਟੀਲ ਮੱਕਲ ਹੋਕ ਨੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਟਰੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਗੈਪ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. I want it all. It's 410, I'm on the 410. Sento Musiala, Sonny Martin. Je te loupé l'on les fit pas d'air. Mais vite le dani mara. On the jata. You know what I mean? Rest in peace to the motherfucking go, baby. ਹੰਬੋ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੀ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵ ਆ ਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਓ ਬਾਵੇਂ ਦੀ ਜੀਨਾ ਲਾਈਫ ਹਸੀਨਾ ਰਾਤਾਂ ਰੰਗੀਨਾ ਚੋਬਰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਕੰਪਾਂ 'ਚ ਲੀਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਨਾ ਕਈ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੇ ਕਸੀਨਾ ਪੱਕੇ ਤਰਾ ਗਿਆ ਨਾਉਂਡ ਤੇ ਜਵਾ ਗਿਆ ਦਾਰੂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਡਰਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਜਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਸਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੇਮ ਲੈਕ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਪੀਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੀਚ ਬੁੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਟੀਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਪਕੀ ਤੇ ਬੀਚ ਲੱਗੀ ਫੁੱਲ ਮੌਜ ਆ ਸਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੌਸ ਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਸ ਡਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਵੈਂਟੀਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਆ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੈਂਟੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਏ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਸੈਂਟੀ ਆ ਸਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਐਲੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ
ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਆ ਜੱਕੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਆ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਬਣਦੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਆ ਲੰਬੇ ਹੀ ਦੌੜੇ ਆ ਹਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌੜੇ ਆ ਮੁਕਤੀ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਪਾਂ ਚ ਘੋੜੇ ਆ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਮਰਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਐਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ दे दो यार। सब कुछ धुंधला मैं सारे ये गम भुला के झूम रहा सब कुछ धुंधला मैं सारे ये धुन भुला के घूम रहा सब कुछ धुंधला मैं सारे ये गम भुला के झूम रहा सब कुछ धुंधला मैं सारे ये धुन भुला के घूम रहा सब कुछ धुंधला ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੱਭਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ उठे हाथ पूरे क्लब में जब बोलता सच में बचाने खुद को क्यों होता खर्च में धुआं है फैला खाली एक ही कश में पर हम नाचते गिरा के सारी दारू फर्श पे जाके पूछ मेरा नाम सोच के देखा जो मैं जिंदगी में जीता ये जुनून है गवाह मेरे आखिरी निशान तेरे कानों तक एक ही रास्ता वो दिल से जबानों तक बोलूं कि आंखों जिंदगी देख जिंदगी फेक सारे नेक चेहरे वालों के इरादे अनेक पूरी किताब मैंने लिखी छोड़ा पन्ना बस एक फेंकी किताब मैंने आग में और हाथ लिया सेक आखिरी बेबस से कागज पे नाम तेरा ये सिलेबस में फेमस है काम मेरा पर ज्यादा काम और रिलेशन में लेबल पसंद नहीं क्योंकि जानता हक से मैं दाम मेरा यो कुछ धुंधला सारे ये गम भुला के झूम रहा सब कुछ धुंधला सारे ये गम भुला के घूम रहा सब कुछ धुंधला सारे ये गम भुला के झूम रहा सब कुछ धुंधला सारे ये गम भुला के घूम रहा बड़े बोल दे मित्ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਮੇ ਢੋਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਦੇ ਰਲਦੇ ਨਾ ਪੇਸ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ
ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਡਿੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਵੈਲੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਮੱਕ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿਲੀ ਨੇ ਤੇ ਬੂਥਾ ਥਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਟੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ੋਰ ਐਵੇਂ ਕਾਕਾ ਪਰਖੀ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਨੀ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਫਲੋਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਮੇ ਢੋਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਦੇ ਰਲਦੇ ਨਾ ਪੇਸ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੇਸ ਹੁਣ ਭਾਲਦੀ ਆ ਫੇਮ ਤੇਰੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਚਵਲ ਜਨਾਨੀ ਭੌਂਕਣ ਨੈਟਿਲ ਤੇ ਗੱਲਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰੇ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਕੱਖ ਦਾ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪਵਾਈ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਮੁਫਤ ਚ ਕਰਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੱਕਦਾ ਨੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੱਗੇ ਡੱਕ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੋਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਲਾਈਨ ਕਰੀ ਜੈਕ ਨੀ ਆ ਜੋਰ ਲਾ ਲੋ ਝੁਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਕ ਨੀ ਬੜੇ ਬੂਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਮੇ ਢੋਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੂਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਮੇ ਢੋਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰੰਟ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਮਾਟੀ ਫੀਲਡ ਕਰਦਾ ਨਿਜੇ ਘਰੇ ਨਾ ਭਰੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਆਦਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਕਾ ਸਾੜਦਾ ਗਾਣਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਿੱਸ ਮਾਰੇ ਫਿਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਮੇ ਢੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੋਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਮੇ ਢੋਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਰਲਦੇ ਨਾ ਪੇਸ ਸਾਡੇ ਹੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੇਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੁੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਖੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਨੀ ਮੌਤ ਆ ਜੇ ਲੁਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਬੁੱਲੇ ਫਿਰਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇਰ ਕੀ ਸਵੇਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਜੱਟ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਵੇਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਟਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੀਬਾ LBJ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਮੁੱਕਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀਆਂ ਨੀ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨੀ ਲਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੀ ਅਸੀਂ ਨੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਦੇ ਗੰਨਾ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਾਂ ਨੀ ਹਾਰਸ ਤੇ ਪੌਰਸ਼ਾਂ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਚਲਾਈਆਂ ਕਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਕੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ
this is going to look tough.
Really, man? The fuck? वो बॉस हमको वन शॉट कर दिया. Fuck. What do you mean how to read newspaper? Like what? Who reads newspaper? Like genuinely. Yeah, I think I should start doing that. Fuck, that is so boring, man.
Guys and gals, me Mutahar. Do you ever have something stuck in your ear that you've been trying to like pick out for days at this point? Hello guys and gals, me Mutahar. Do you ever have something stuck in your ear that you've been trying to like pick out for days at this point? I've got a problem, but you know who else has a problem? Google. Now you might be actually on the internet probably finding out something about, oh my god, the Google leak looks pretty bad. Or you'll find people who are talking about how Google's algorithm has been leaked, their secret algorithm has been exposed. The algorithm leak, 14,000 Google search ranking factors in the biggest leak possible. So again, you know, ladies and gentlemen, I want to skip through the clickbait and the horror real quickly. What we're about to cover is not the most damning leak possible, okay? This is something that if you ever have been in the world of search rankings, SEO, you probably already know some of these things. So Google's documentation ended up being leaked in the last few days, and this is the Google API Content Warehouse version 0.4.0. Now this was leaked onto GitHub, and it basically was leaked there for about a solid week before things were taken down. What you're seeing here is effectively an archive of all that information that anybody can effectively browse through and read. So I'm not going to be spreading this myself just because I believe this documentation is something Google doesn't want to deal with people looking at, so on and so forth. But plenty of channels have already talked about it. I'm going to talk about it just to kind of demystify and explain some of the goofier internet exploration side of things, okay? Now, somebody that's made a lot of videos regarding the deep web and internet content, Google is like a first step for plenty of people. It is the largest search engine in the world. To give you an idea, this is the top websites in the world right now. Number 1 is Google, number 2 is this site, YouTube, and then after this is Facebook, Instagram, Twitter, Baidu, Wikipedia, Yahoo, Yandex, and then WhatsApp, okay? So to give you an X videos comes right afterwards. Dude, it's actually so crazy is there's more people on the adult website than there are on TikTok and Reddit. Dude, that's crazy. Now, to give an idea, ladies and gentlemen, that makes it where Google is basically a lot of people's first step into the internet. Now, a lot of products you buy, whether it be iPhones, Android devices, most modern OEM enabled computers, probably have Google as the default engine. In fact, a lot of web browsers you download probably have Google as a default engine that you connect to. Now, there's plenty of search engines that are out there, but Google has basically remained one of the top search engines for basically its inception, okay? Plenty of people have come. Bing, DuckDuckGo. Nobody has dethroned Google yet. Now, the way that Google engines work and the way that Google search works is it basically sends a lot of crawlers, a lot of trackers throughout the web, and basically catalogs and archives links upon links upon links, and then it throws that into an algorithm that then ranks those websites into what is most relevant for anybody searching. So, for instance, if you want to look up Mutahar, right, it might offer you different Mutahars. I'm not the only person named Mutahar in the world. But if you type in Mutahar Deep Web, it'll then look through its rankings and a whole mirage of data and basically analyze that the Mutahar that their people are searching for is probably the one that runs the YouTube channel Some Ordinary Gamers. And it'll feed you all the relevant information according to it. And you'll probably have to go to page 8 or 9 before Google starts spitting at you all the different Mutahars in the world. But that's how the search engine works. Because for Google, it's ideal that any search engine passes you the most relevant result as a number 1. So that you don't go to Bing or other search engines if you realize Google is actually just dog water to begin with. Now, interestingly enough, Google was asked about this information, and they clarified that the algorithm-leaked data is not comprehensive or fully relevant to its current search rankings. The company stated that it is committed to providing accurate information, but will not offer detailed explanations of individual ranking signals. Google also highlighted that its ranking systems change over time, and that it aims to communicate relevant information to the community. And while this is true, this is kind of a fucking PR response in a way as well, because in general, obviously that's what the site is going to say. They're not going to tell you, yeah, our secret sauce is available to be viewed. No, portions
of it is out there, but some of it's not really being used, which is kind of true. Obviously, as you develop things, they get thrown into your entire system, and then, of course, they get depreciated, you switch things out. Everything that gets leaked is never 100% accurate of the time of the leak. Sometimes it can be years old, sometimes it can be days old, sometimes it could be even weeks old, as it may appear in this situation. So, you guys remember a while back when we looked at that YouTube P-score thing from years ago when certain channels had a P-score embedded within their actual YouTube code that appeared to basically be like a score for ranking certain channels, right? Certain channels would have a higher score than other channels, and a lot of people collaborated to the more popular and the more respected channels by YouTube were usually given a higher score than a channel that was started maybe like a week ago or a smaller channel in general. So, while that was YouTube, something that Google has pretty much been doing since its basic inception is something known as PageRank. And there is a lot of actual educational articles on it. This is actually one from Cornell. So you can actually read, like, we live in a computer era. Internet is part of our everyday lives, and information is only a click away. Just open your favorite search engine like Google, Alta Vista, Yahoo. Yeah, this is old. This is a little old. Ain't no motherfucker using Yahoo anymore, that's for damn sure. But for instance, it actually describes how the page ranking system works. So one of the actual paragraphs you need to read out of this is modern search engines employ methods of ranking the results to provide the best results first and are more elaborate than just plain text ranking. One of the most known and influential algorithms is the PageRank algorithm used by Google search engine. It was invented by Larry Page and Sergey Brin, who basically owned the parent company of Google, Alphabet, while they were graduate students at Stanford, and it became a Google trademark in 1998. The idea that PageRank brought up was that the importance of any page can be judged by looking at the pages that link to it. If we create a web page I and include a hyperlink to the web page J, this means that we consider J important and relevant to our topic. If there is a lot of pages that link to J, this means that the common belief is that J is important. If, on the other hand, J only has one backlink, and that comes from an authoritative site K, which authoritative means, websites that are typically large and more recognized like Google, CNN, or Cornell.edu, we say that K transfers its authority to J. In other words, K asserts that J is important. Whether we talk about popularity or authority, we can iteratively assign a rank to each page based on the ranks of the pages that point to it. So generally speaking, if you look for, I guess, any topic on the internet, let's say you look for aliens, for instance, right? What Google's ranking is going to do is it's going to most likely grab, the most relevant and the most, authority leading rank or search that it can find. And the best way to describe it is like, let's say that there's like fucking 10 pages of aliens, right? You make an alien website, and all of a sudden you've got, CNN, Fox, some of the big, iconic, mainstream established websites are linking to it. Your page is probably going to be more relevant than like some spooky like 1999 web forum that is still active somewhere deep on the internet. That's kind of how these systems work. And this builds the entire backbone of an industry called search engine optimization, or SEO. So the actual information that ended up being leaked actually is apparently mostly API calls of things that people understand. So inside the Google API Content Warehouse, they do talk about things like nav boost and things like good clicks. So if you actually look into it, you can see that attributes here are clicks bad, clicks for images, clicks and totals, and of course, this is all information. These are all flags that Google is calculating to attribute what website ranks over the other. And that's how this entire situation tends to work. Now, obviously, there are over 10,000 something calls, so it's not as easy to just look through this information and come up with what is conclusive. But this does shed some light on what Google systems are running, okay? How they calculate and what they use to effectively run in their algorithm. What they're looking for is mentioned in this situation. So there's actually a really good write-up by a person known as Patrick Stocks, who basically works in the same field. And I guess I'm going to read a few excerpts from his research as well that I think almost like mirror exactly what I've been looking at as well. So when it came to those clicks that we just discussed, he basically writes, are clicks used in rankings? Well, yes and no. We know that Google uses clicks for things like personalization, timely events, testing, feedback. We know that they have models upon models trained on the click data, including nav boost. But that is directly accessing the click data and being used in rankings. Nothing I saw confirms it, and nothing I saw actually confirms it either. So as far as they know, there is nothing to confirm that it takes into account the click data of individual pages.
pages to reorder results, or that if you get more people to click on your results, that your rankings would go up. So it appears that, there is no actual proven method that you can somehow artificially increase yourself in Google's rankings. So this should be easy enough to prove if that was the case. I've tried many times. It tried it years ago using the Tor network. My friend Russ Jones tried it using residential proxies. They couldn't just self-gasp themselves up in the actual algorithm. So there's plenty of checks and balances for it. So when asked, is Google lying to us? What I do disagree with wholeheartedly is SEOs being angry with the Google search advocates and calling them liars. They're nice people who are just doing their job. If they told us something wrong, it's likely because they don't know they were misinformed, or they've been instructed to obfuscate something to prevent abuse. They don't deserve the hate that the community right now is giving them. Like all things, there is obviously drama attached to this. The SEOs, their entire job is to optimize pages for the algorithm, they're the ones that are basically getting into online spats with actual engineers and people that are representing Google right now. And I don't think any of that is okay. All this shit is incredibly complicated. I doubt that even people who work at Google actually understand how their system truly works. It is that large of a system at this point. Like, I doubt that there's even plenty of people that are working at Google's actual algorithm that can probably truly explain to you the quality nav-boast craps click signals, okay? Click impression signals for craps. All the crappy signals are getting filtered out, boys. So obviously, while this stuff has kind of been leaked out, all of the stuff that I've read doesn't necessarily amount to anything anybody in this field doesn't really know anything about. So I guess the best way to kind of like cover it is for people who are in SEO, like optimizing websites, to be at the forefront of any search result. This kind of documentation is important to look through, but anybody that operates in this field, like in the field of SEO, none of this stuff is truly earth-shattering information. I guess a great analog is if you're somebody that is a YouTuber by any chance, you probably understand the importance of having a good title and a good thumbnail. Obviously, having a good title or description, tags, a thumbnail is the actual way for you to get into a search ranking. So if somebody searches up a specific topic, as a YouTuber, you want to be at the top of the search results. And typically, the only way to do that is by actually using your metadata. If you ever get annoyed by clickbait, that's unfortunately the world of YouTube we live in. For people who don't title their stuff properly, it is the difference between having your video go into the recommendations algorithm or not. And for a lot of people on the internet, where Google still controls, to this day, 90% of the search market engine, yes, that is 90.8% of the internet search market belongs directly to Google, for people finding the tiniest advantage is the most important. Now, you might be wondering, well, Mudo, why doesn't Google actually, be honest about it? Why does this stuff have to be leaked? And why is Google so secretive? Is there a reason behind it? Could they be censoring stuff without letting you know? The reality of it is, obviously, any search engine can manipulate stuff, but it's actually not in the benefit that Google manipulates things for you. They actually would love if you get access to exactly the information you aim and want to seek. But the reality is, if they were very honest about what their algorithm
algorithm was and how to actually use it and manipulate it, immediately, within the millisecond that they would do that, all the scammers, spammers, scumbags would effectively rush in and ruin the search engine right there. So there's a reason why this is more secretive than the Krabby Patty secret formula, and that's literally because for the sanctity of this thing to function the way that most people expect it to, it has to remain a very close, tightly guarded secret. So no, this algorithm leak isn't exactly the end-all be-all, nor is it, in my opinion, even close to being something that, is a massive expose for Google. It is technically a leak, but I think for Google's sake and for the health of the search engine, a lot of that stuff has remained secretive. It does, however, shed some light on how Google factors in multiple hundreds, if not thousands of data points into creating a actual proper search experience. Now, hopefully, if they keep AI and shit out of it, that'll be the best secret sauce right there. But yeah, technically, the Google algorithm has been leaked out. But I wanted to talk about it and really discuss exactly what it was about. So hopefully you learn something. Hopefully you figure out what goes behind your search engine and how it actually gives you relevant results for whatever it is that you're looking for on the internet. If you like what you saw, please like, comment, and subscribe. Dislike if you dislike it, I am out. As you can no doubt tell, I've left my normal setup, ventured out into the great outdoors, God's country. I've left my domain expansion, I've been kidnapped. As you can no doubt tell, I've left my normal setup, ventured out into the great outdoors, God's country. I've left my domain expansion, I've been kidnapped by Austin Powers here. But my little adventure has the added benefit of serving a second purpose, which is being witness protection, so Mike Tyson doesn't track me down and, wiggle his way down my chimney and beat my ass in the middle of the night, because I'm about to sling a few insults here at this absolutely awful event that he's agreed to. I've said since day one, the genesis, that the Jake Paul vs. Mike Tyson fight is a pathetic and embarrassment of an event. Just from a conceptual standpoint, it is so dog shit. And somehow it just keeps finding a way to get even worse. It's an absolute circus show. So, Mike Tyson recently just had a medical emergency on a flight. He had an ulcer flare-up, and it's postponed the event even further. I'll dive into that a bit more, but I just want to start, it's not even just
the more recent stuff that's happening with the embarrassing press conference where Mike Tyson made the baffling statement about how when Jake Paul was 16 and dancing, it gave him a boner. That's a level of trash talk I've never seen before right there. I don't know what the plan was, but it fell flat on its face. Like, I tried to figure out what the play might have been there, the strategy on stream. The only thing I could come up with was that he was trying to, like, belittle him as a fighter. It's like, oh, this guy, he's not a fighter. No, I don't even want to fight this guy. I just want to fuck him. Yeah, like, he, like, dances around and stuff, and, like, I just want to get over there and fucking squeeze on his little cheeks and twist on his nipples. Like, maybe make him uncomfortable with statements like that. I don't know. But it was a shocking display at the press conference. Like, everything about that was awful. Like, they weren't taking it seriously. How could anyone take the fight seriously? I speculated from the beginning that there's probably a no knockout clause. On paper, Jake Paul should have no chance against Mike Tyson, but he's 60 years old and he is turning to dust, as every human being will as they get later on in life. Like, it's the way of the world. Mike Tyson is one of the best to ever fight. By all definitions, he is a certified legend at the top of the food chain. But he's pushing 60 years old. He's not in his prime anymore. And real life isn't like anime. Very rarely will you have, like, the ancient geriatric master with, like, a graying beard be able to stand toe-to-toe with the youth. He's not Master Roshi, right? It's not how that works. Seems like a mod from GTA or something where you just spawn in two characters and have them fight because it's silly. But to have it happen in real life is just kind of sad. This is a lose-lose situation for Jake Paul, by the way. Jake Paul has a reputation for only fighting retired ex-fighters, not even boxers most of the time. He's fought one boxer and lost, and now he's once again just going back to just fighting an old guy who has retired. So if he wins this fight, no one's going to give him respect because he beat a nearly 60-year-old Mike Tyson, once again continuing Jake Paul's reign as, like, the fucking tyrannical boogeyman of the retirement homes. And if he loses to Mike Tyson, he's going to get clowned on endlessly for losing to a nearly 60-year-old man. It's fucking stupid. It's just the most blatant cash grab off of two names, because Jake Paul still has somewhat of an audience, and Mike Tyson is still one of the biggest names in sports history, so he's obviously going to bring in a big crowd that just likes to watch him fight or do anything, really. But beyond that, this isn't a you paid for the whole seat but you only need the edge type of situation, You're not going to be biting at your nails, jumping out of the chair at every thrown jab or anything, because it's just kind of like a pathetic little whimper of a cash grab, really. Like, Mike Tyson has fought legends. Jake Paul fights to get out of his brother's shadow. They're not the same. This isn't a real match, no matter how hard they try and market it as such. Like, the press conference really set the tone of the whole thing where they're both laughing back and forth. This isn't a real thing. They're just both getting paid a bag to do it. And that's it. Anyway, I'll talk about the most recent blemish on this event. Mike Tyson had a medical emergency while on a flight. It was identified as an ulcer flare-up, and he's been advised to avoid heavy training for a few weeks. So, in response to this, the event has been postponed to later on in the year. People who had previously purchased tickets are still going to be able to have those tickets honored for the new date and all of that. Or if you can't make it, you get a refund. I don't even know why I'm bothering to cover that component of it. I don't fucking work for SeatGeek, but I figured I'll just give you the entire kit and caboodle here of the situation. So it's been postponed because of Mike Tyson's ulcer flare-up. And if Jake Paul had any level of shame, he would just call off the fight in response to that. Just be like, hey, Mike Tyson, you got nothing to prove. But unfortunately, he's a pathetic little worm who would never do that, because to him, he does have something to prove. That he's a real fighter. And to prove that, he fights retired boxers and sometimes not even boxers. If your grandfather's in a nursing home, you might want to give him a wellness check, because Jake Paul might have come into the middle of the night and given him a contract to take Mike Tyson's place in the fight. Doesn't matter if your grandfather's a retired plumber. That man's going to get his shit pushed in by Jake Paul, and he's going to be talking about it for months about how he's like the ultimate fighter. But he refuses to fight actual people his own age or in the actual sports that he is competing in. And the one time he did, he lost. So he's gone right back to just
attacking the elderly. It doesn't matter what happens in this fight. There's not a single soul on this planet that's going to look at Mike Tyson differently. If he loses the fight, no one's going to think that it ruins his legacy or anything. He's almost 60 fucking years old. Like, most people are kind of expecting that, but praying that he just, goes in there, goes ballistic, and just beats Jake Paul to a pulp. Like, obliterates him into, like, an unrecognizable fucking mess of flesh. That's most people's hopes, but if it doesn't happen, it's not going to affect Mike Tyson's legacy. For Jake Paul, though, everyone is going to look at him differently, no matter what happens with the fight. If the fight happens, which it seems like it will under no circumstances does it seem to be getting canceled, when this fight happens, everyone's going to look at Jake Paul even more pathetically. People will feel more disgust towards him than a urine stain in a gas station toilet. Because if he wins, he beat up an old Mike Tyson. If he loses, he lost to an old Mike Tyson. There is no winning in this scenario. The only winning move was not to play. But he can't fucking help himself. So anyway, Mike Tyson and Jake Paul both did issue statements in response to the ulcer flare-up, which I'll go ahead and go over here. Mike Tyson said, "I want to thank my fans around the world for their support and understanding during this time. Unfortunately, due to my ulcer flare-up, I have been advised by my doctor to lighten my training for a few weeks to rest and recover. My body is in better overall shape than it has been since the 1990s, and I will be back to my full training schedule soon." Now, Mike Tyson is in phenomenal shape, for sure. But there's a lot more that goes into fighting than just the shape that you're in the physique. And that's where old age really starts to take a huge toll. Jake Paul, this may have bought you some time, but in the end, you will still be knocked out and out of boxing for good. I appreciate everyone's patience and can't wait to deliver an unforgettable performance later this year. We can only pray that that's how this all unfolds. Everyone's got their fingers crossed that that's exactly what happens. Jake Paul also issued a statement. "I fully support postponing the event so Mike Tyson has no excuses come fight night. My fans know I don't want to face Iron Mike at anything but his best, which is why I'm fighting him at almost 60 years old when males really peak. 60 years old is when a man hits his power spike. That's when he's at his best." Yeah, absolutely. Yep, that's how that goes. But let there be no mistake. When he steps into the ring with me, I will be ready to claim my W with a sensational finish. Paul vs. Tyson will be one for the ages, and I promise to bring my best for this once-in-a-lifetime matchup. Jake Paul is correct about one thing in his statement, that Paul vs. Tyson will be one for the ages. It'll be looked upon for years to come as one of the worst examples of boxing ever displayed. A grim reminder of just how bad and corrupt it can get and how greedy it can become. This shit is embarrassing, and I think it will always be looked upon as a spittoon for people to spit in to remind us that, yikes, that was a shameful period in boxing history. It's really just awful. And I just wanted to talk about it a little bit in a video because of the most recent medical emergency for Mike Tyson. So anyway, that's really about it. I don't think I'll be watching it. I never really do. I just catch the Twitter clip highlights to figure out who won because it's a waste of time watching a Jake Paul fight. I'd honestly rather be listening to like a fucking 5-hour lecture on the Krebs cycle from my old university professor. That shit is just boring from him. So that's really it. So yep.
saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. It's like a dream, what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath away and make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath away. Nobody does it better, babe. Bring me closer, want me to hold on to you tight. You brought me closer, feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Ooh, it's like a dream, what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath away and make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath away. Nobody does it better, babe. Bring me closer, ever, babe. Take my breath. Oh, and I see it. Take my breath away and make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath away. Nobody does it better, babe. Bring me closer, ever, babe. Take my breath. Take my breath. Nobody does it better, babe. Bring me closer, ever, babe. Take my breath. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening,
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. There's a crazy clip from Pokemon's stream going viral right now that I really want to talk about, but it also made me want to speak on a story I've never told about an experience I've had that's somewhat similar to the one she describes here, at least in terms of creepiness. And, well, now I finally have a reason to get that baby off my chest here, so that's gonna be cathartic. Let's dive in. Many years ago, when I was like super omega active on YouTube, and I was working with a lot of different editors. There was one editor in particular that I would work with a lot because his edits were really good, but he had one major problem, which was that sometimes out of nowhere his videos would just be like a week or two late. Months go by and he messages me out of the blue and he says, "Hey, do you have time to talk? I'm ready to finally tell you why I've been struggling so much with deadlines." In the history of the human race, I don't think there has ever been a good ending to the sentence, "Hey, do you have a minute to talk?" That always precedes the most vile shit you'll ever hear in your life. I can't even imagine a situation where you'd hear that sentence and think anything other than the most negative thing you'll ever hear is about to happen. Like, imagine you're in heaven and the Lord pulls you aside right in front of the pearly gates and he says, "Hey, you got a minute to talk?" Well, you immediately assume you're just going to hell. Like, there's just no world where that sentence ever precedes good news. Tell me why he proceeds to tell me that the reason why he would sometimes turn around videos a week or two late is because he couldn't stop touching himself. I was trying to pick which word to use. To me, his, in a way, employer of many months. Stop for a second and really let that stew in your noodle. Let it marinate for a bit. How Coomer-brained must you be not only to do this degenerate act of just fucking beating your meat to a streamer's gameplay footage that you're editing, but then tell her that the reason you're late on some of the edits is because you can't stop squeezing your hog to the footage that she sends you. There are so many layers to this onion here. Let's just start by picking apart the most obvious. Why? Now, I know in the most severe cases of porn addicts, they'll sometimes try and communicate directly to the porn star by, like, leaving comments or sending messages or whatever, and that's always the saddest shit you'll ever see. That'll bring a tear to even the strongest man's eyes. Occasionally you'll see those moments where dudes try and directly communicate to the porn star, leaving comments on their posts saying things like, "Can't wait to watch this one when I'm off work," or "When my wife goes to bed, that's when the bad boy will play. Thanks for providing me with tonight's entertainment," whatever. Like, just leaving these desperate posts, you know, cock in hand, giving a salute, like, "Thank you, madame, for your service. This will be a legendary gooning sesh." But even in those cases, they're communicating with someone they don't know. This guy was her editor for many months. And he was not only jerking off to the content he was being sent, which was just gameplay videos, I imagine, or like just chatting stream moments. Nothing.
even sexual, and he was still choking the chicken to it, fucking playing the skin flute, and then had the gall to tell her that he was doing that, is just incomprehensibly unhinged. She was his boss. She was employing him. So he basically went right through HR, bypassed that protocol, went straight to the top of the food chain, kicked in the door, and said, "Listen, boss, I'm fucking obliterating my wiener, and what are you gonna do about it? That's why I've been late on my deadlines." Like, I don't think he came in with that energy. I bet he was, like, super shy about it. He was probably like, "Oh, Pokimane, so I know I've been kind of late recently, but it's only because I was, ooh, how do you say, jerking off to your work." When I tell you I've never halted a conversation so fast, because I'm like, you are the person that I send like hours of footage to. I don't want to know what you're jacking it to. I don't want to know more. I shouldn't even know how much I know right now. I shouldn't know. I'd actually argue that it's better she did know this, no matter how awful it is, but that way she can get the fuck away from this weirdo ASAP. Just say, "Take a hike, Buster. This is fucking terrible." But I felt so bad. So when he's like, you know, like, this is like an addiction of mine, I genuinely felt really, really bad. So I still paid him for months. What the hell do I do? Fire him? Am I even allowed to fire someone because they're... That's definitely towards the top of the list for the best reasons to fire someone. That actually might be reason number one why you could go ahead and can somebody. Because they can't stop fucking beating their cock to you, their employer. And they're also not doing their job well by being 1 to 2 weeks late. Which, by the way, is a long time of just fucking gooning here. This degenerate would miss his deadlines by a week or even up to 2 weeks because he was obsessively polishing his scepter to his employer. You 100% can and should fire someone like this. It's not like the Better Business Bureau is going to defend him. You're not going to have agents show up at your door knocking and be like, "Hey, listen, we know what happened here. You discriminated against this kind, gentle sir. You fired him just because he was obsessively masturbating to you. Well, I'll have you know this is a free country, ma'am. This is a civilized society. You can't fire someone for that. There's no crime. What is the charge? Busting a nut? An immaculate, gooey nut? This is democracy manifest." Like that just wouldn't happen. But I actually understand why she was hesitant to do that. And this is where I'm going to get into a story I don't think I've ever told. I'm pretty sure I haven't. Where I had something somewhat similar happen a long time ago. Not to this level, but something closely related. So, a while back, I used to just accept any voice acting role I was offered by any human being with a pulse on the planet. If they said they needed voice lines done, I would do them for free just because I really enjoyed doing it. It's actually how I met Jackson, and if you have ever watched the official podcast, you'll know that our X-Men origin story between Jackson and I's friendship is that Jackson actually scammed me through this process. He sent me an email asking if I'd be down to do voice work for his upcoming game, and then sent me like some in-game screenshots and promotional screenshots that were actually just Dark Souls images that he photoshopped to fit his game style that he tried to sell me on. And I was like, yeah, fuck yeah, I'm definitely down to do voice work. And it turns out he never had that game, he just wanted to play games together, and we did, and ended up becoming extremely close friends, and now we make Godslap together. Like, he's been a friend of mine for almost a decade now. And it came from that. But there's definitely a dark side to that. The Sith Lords definitely did
exploit that very stupid thing I used to do, just accepting any voice acting roles ever from anybody. So, I think this was after I had met Jackson and after we were friends. I can't quite remember the exact chronological timeline here, but I received a very interesting email from a very peculiar man that, under any other circumstances, probably would have triggered red flags in a sensible person's mind, but for me, I saw the word, like, voice acting opportunity, and I was like, I'm in. Say no more. So I emailed him back saying that I was absolutely down to do this, and when should we get to work on it. So we communicated back and forth a little bit and eventually set up a Skype call, because this is when Skype was still popular. I think one of the best things that's happened in modern day is that Skype has died. That was legitimately just like fucking official malware. That was the worst program that ever saw success, and I am embarrassed that it ever got as popular as it did. But this was a different time and day back then. So we went in Skype and we had our first voice call a couple days after that initial email came through. And it wasn't like super weird. He conducted himself pretty professionally. He was trying to tell me about the game. I don't remember all the details around it. It was a game that never was going to happen, though. It was unbelievably ambitious. It was some kind of like MMO hack and slash with like a super deep branching plot lines, all made by him, the solo dev. He was just spamming every buzzword he could about this game, but again, it didn't matter to me because it was voice acting work and I wanted to get the reps in. And so I just said, yeah, like, I'm super on board, let's stay in contact, you can send me the script and whatever else you need. And that was kind of the end of our like introductory call. And man, did I open Pandora's box. Pretty much immediately after that call, he would start messaging me on Skype often. And it wasn't about the project all the time. Sometimes it was just about his day, which I would engage with. I'd be like, oh, it's really interesting to hear about how your day's been going. Thanks so much for sharing. And then he'd start tiptoeing into like some other small talk. It started to feel like he was interrogating me sometimes, where he'd be like, so what'd you do today? And I'd tell him, be like, oh, so like, you didn't really respond earlier. I thought you were just doing something really important, but you were just hanging out at home? That's kind of weird. Like, what? Are you sure that's all you were doing? I was like, brother, yeah, I mean, I don't know, I'm just not like always on Skype. He's like, oh, no, that's fine. You just didn't respond to me. And then he'd start gradually asking more and more questions, like questions you would ask someone on like the most awkward first date imaginable if you were some kind of Reddit mod. He'd be like asking me certain things like about anime and just like general interests and shit. And this is right before I had graduated college. I was still in college because I remember he was asking me about how my schooling was going. And I was like, yeah, I mean, it's going well. How's your project going? And he'd tell me some shit that I know wasn't happening. He's like, oh yeah, I got a lot of work done today on the game. I was in C#, really just fucking in my flow state. I took like the limitless pill and man, I programmed fucking 15 trees and I have 17 actors doing mocap for me and they're all martial arts specialists, so the hack and slash animations are top notch. And I was like, oh, that's awesome. Do you have like that script or anything ready? He's like, oh, it's still being worked on. And then he just keep kicking that can down the road and change the topic of like, but enough about the game. Tell me about exercise physiology. What's that like? It's like, brother, you're not my mom. Like, why are you checking in like this? I don't care. And we're not really like close or anything. So why would you get upset if I don't like respond to you in a timely enough fashion? Like, it was just a disaster. So this went on for like a few weeks of this kind of stuff happening every couple of days, and I was ready to just wash my hands of it and just say, all right, this voice work isn't worth, I'm not getting the juice isn't worth the squeeze, as they say. So I kind of just started to let that peter out. I'd really very rarely respond to him, so he'd send me like a few messages over the course of like a week or two that I just would ignore. And then it got really bad. This guy was sending me like deep messages, and some of them just very unsettling. And then he eventually sent me a message talking about how he's about to end it all. And, he doesn't expect me to respond since I haven't responded in so long, but he just wanted me to know how much our friendship meant to him and all that. And I fucking freaked out, immediately responded to that when I saw it. And then he once again just switched gears and was like talking about my day and his day and this and that. And once again, just going down this small talk and then like interrogating me like, well, why haven't you been responding? So that I had to come up with a story like, oh,
just haven't been checking Skype for the last few weeks, just stuff going on. He's like, oh, okay, yeah, no, okay, yeah, I'm sure, and then getting upset and whatever. I recommended him getting, professional help, which he claimed he was doing and seeking, but it wasn't really working. The only thing that really helped him was our little chit-chats back and forth. So obviously, I kept that door open, and luckily, the frequency of his messages was much slower, so over the course of a few months now, the messages were far less often. So it wasn't that big of a deal, but it still just felt miserable to keep this communication open. It felt like a hostage situation where, if I didn't respond, he might do something, and it was scary. And as this continued for quite some time, he'd make threats occasionally of harming himself if I didn't respond in a fucking speedrun fashion to one of his messages. When I got into a relationship, he sent a really creepy message about, well, is it serious? Why is it serious? What do you see in her? That kind of thing. It was all really alarming shit. And I'm not going to keep boring you with details here, but similar to how Pokimane didn't immediately fire that guy because she felt bad for him or was a little afraid of what might happen or whatever, it's easy to take a step back when you're not involved in it and just be like, oh, this is what you should have done. But when you're actually in one of these really weird fucking situations on a personal level here, it's just a little harder to do that. So I do understand that, but again, definitely the right course was firing that guy. In my situation, eventually what I did was I just stopped responding. If he did send me one of those messages, I would reply just telling him he needs professional help, and I won't talk further about these kind of things with him because I am not a professional. I'm not equipped to deal with that or handle that or help him in any way. He needs real help. And that would be how I'd respond to those messages when he sent them, and he eventually stopped. But that went on for a long time. But yeah, anyway, just kind of wanted to talk about all this. That's about it. See ya. जब पापा की परी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर रही होती हैं तो चेहरे का भाव कुछ इस तरह से होता है। सारी बहादुरी, सारा साहस और सारी बदतमीजी विपक्ष के नेताओं के साथ निकलती है। दोस्तों, आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं आज तक न्यूज चैनल के। इसके अंदर कांग्रेस की नेता रागिनी नायक आज तक की न्यूज एंकर से सवाल कर रही हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं करती कि 10 साल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। इस पूरे कार्यक्रम में जिसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये जो एंकर हैं, ये जो पापा की परी हैं, वो लगातार रागिनी नायक के साथ बदतमीजी करते हुए कह रही हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इस तरह की हिम्मत इनकी भाजपा के प्रवक्ताओं के खिलाफ नहीं होती है। इस तरह की हिम्मत ये लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ निकाल सकते हैं। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल रागिनी नायक के साथ हो रहा था। देखिए। Do not lie. मैं विक्टिम झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, अगर खुद ही सफाई दे रही हैं, झूठ मुझे बोलने तो दीजिए। अब जाहिर सी बात है, रागिनी नायक विपक्ष में है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रागिनी नायक ने एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछा था कि क्या आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि पिछले 10 सालों में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं। तो इसमें इतरा के पापा की परी कहती हैं, हां, हमने सवाल पूछा। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, और इसका जिक्र मैं पहले अपने कार्यक्रम में कर चुका हूं, जिस अंदाज में सवाल पूछा गया था कि आपने पिछले 10 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, वो चाटुकारिता की सबसे शर्मनाक मिसाल है। और उससे भी अजीबोगरीब मिसाल है प्रधानमंत्री का जवाब, जिस पर पलटकर सवाल होना चाहिए था, मगर वो सवाल नहीं किया गया। देखिए कल के इस कार्यक्रम का ये वायरल क्लिप, जिसमें पापा की परी ये बताती है कि हमने प्रधानमंत्री से ये सवाल किया था, मगर ये सवाल किस तरह से किया गया था, आप खुद देखिए। आप ही के चैनल के जो कि सफेद को काला करने का काम करते हैं, उन्होंने बताया एक ट्वीट के जरिए कि 73 इंटरव्यू मोदी जी के हुए। वो 73 पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे या कुछ ग्रुप में भी ले रहे थे, उनमें से कितनों ने मोदी जी से पूछा कि 10 साल में आपने एक प्रेस वार्ता क्यों नहीं की मोदी जी? हमने पूछा, बात करना चाहते थे, हमने पूछा। क्यों नहीं की? आपको सुना देते हैं जब आज तक ने ये प्रश्न प्रधानमंत्री के सामने रखा था, ताकि आगे आप ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कभी ना बोले। सुनिए। सर, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप कई मर्तबा आपका इंटरव्यू करने का मौका हम लोगों को दिया करते थे। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और इंटरव्यू करने का मौका भी कम मिलता है। तो लोग ये पूछते हैं कि जो मोदी जी हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू क्यों नहीं करते? आप बताइए दोस्तों, क्या ये सवाल
बगैर चाटुकारिता के नहीं हो सकता था? क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए था कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सत्ता में थे तब उन्होंने न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए? और क्या आप जानते हैं इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं अपनी बात डायरेक्टली जनता तक पहुंचाता हूं। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि आजकल की जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष नहीं है। जैसे आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, सामने जो एंकर बैठा हुआ था उसका नाम राहुल था, तो राहुल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हमेशा मेरे पक्ष में बोलता है, तो मैं जानता हूं राहुल कौन है। यानी कि प्रधानमंत्री इस बात का इशारा कर रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है, पत्रकार निष्पक्ष नहीं है, जो बहुत ही अजीबोगरीब तर्क है। कायदे से इन पत्रकारों को पलटकर यह सवाल पूछना चाहिए था प्रधानमंत्री, 2014 से पहले भाजपा का जो मुखपत्र था पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, ये तमाम संस्थाओं को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था। भाजपा के जो करीबी संस्थान थे या न्यूज चैनल्स थे, वो लोग मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे। यही नहीं, इंडिया टीवी, और आप जानते हैं इंडिया टीवी के मालिक कौन है? रजत शर्मा। आप यह भी जानते हैं कि रजत शर्मा भाजपा के कितने करीबी रहे हैं। इंडिया टीवी को भी मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता था। और आपको याद होगा हाल ही में जब रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था तो चाटुकारिता की शर्मनाक मिसाल पेश की थी। एक शादी का निमंत्रण पढ़ने लगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान में। वो क्लिप आपको याद है कि नहीं? देखिए शर्मनाक पत्रकारिता की यह मिसाल। इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई,